ABG is like today's fourth series, what we are going through, each. So we people are on the same page, no improvement at all. Once we ask something, you people are just blank. So first, we're going to ask what is ABG and what we're going to like interpretations. You should be explain me because today will be fourth sessions about the ABG. So anyone can come up here. So just I would like to ask, well, so who is comfortable? Because today is not simple. We're going to teach because this already we have gone through. So we're going to ask what is AVG, what we have to see. Last time, last hands-on, we have know how to draw it. So I'm going to again and ask you which way Allen test is going to perform. Anyone can come? Right, please come. Please come. So just show me how we perform Allen test, and then one more sister give her hand so that. So now both sister will perform before ABG collections. First, you have to check radial artery and ulnar artery because if something like with age, generally in ICU, adult ICU, genetic patients happen, and we are drawing blood from the like some of having some atherosclerosis, fragile artery. So you have to check the patency of how much blood flow is there. So now sister will going to perform Allen test. Just let's see, please. Sure. What you do? Just explain with words. आप कैसे करेंगी बताएं आपको. Just मैंने one by one on a step way. So just speak up, है ना? Because everyone going to listen properly. Just first take permissions. We are going to draw blood from your artery because this ABG. So take permission from patient. So it's our because we focus on the soft skill as well. Very mild your sound and your very polite way you want to ask. And then first, what you want to do? Both uh, like fist your hand like this. आप ऐसे करो. ये पहले दोनों को वो करो first. Remove this one. Radial and artery you want to then fist. First we remove one. Okay, that's fine. Ulnar artery is working. Awesome. Both radial and ulnar artery is working. It's Allen test. Then you can perform ABG. Okay. So I have ABG. So she will going to tell us what is the meaning of this all no component. So please speak and explain the all our nursing stuff. What is this? What is full form of ABG? Arterial blood gas. Okay, that's fine. Then you go ahead. Please go. पहले पेशेंट का नाम चेक करते हैं जी जी ओके राइट फाइन फिर डेट चेक करते हैं टाइम चेक करते हैं ओके फिर ये पीएच इसका नॉर्मल रेंज होता है 7.35 से 30 ओनली 45 है ओके और इसमें सर 7. व्हाट डज मीन पीएच व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीएच का क्या मतलब होता है जो बॉडी पे ब्लड है okay and after that what number is the next PCO2 partial pressure of carbon dioxide what is the normal limit 35 से 45 ये क्या चीज़ है ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मैंने कैसे ये क्या चीज़ बताता है कि ब्लड में कितना CO2 है राइट नेक्स्ट PO2 36 नॉर्मल PO2 anyone normal PO2 please okay what is meaning of PO2 what is going to in okay and next next what and you electrolyte you just remove the lead go for bicarb how much normal
कैन यू टेल मी व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ बाइकर? बाइकर में कितना वैल्यू होता है? सॉरी, द बाइकर 22 to 40, 26 एंड उसके बाद देखिए SpO2, SpO2 कितना दिखा रहा है? ठीक है, ये सर 93 93. जी सर. So SpO2 90, what does it mean? What is does it mean कि SpO2 93 means where? It means you have not understanding what I want to ask. If partial pressure of oxygen PO2 is falling, what is difference between SpO2 and PO2? I have repeated it 5 times even. You should know. Otherwise, you are not going to understand the whole concept. So tell me what is PO2 and what is SpO2? Many time I repeated. Anyone? Sister, you? What is your good name? Ah? Victoria. So the golden name you have. Please tell me what is the SpO2 difference between SpO2 and PO2. Because if you don't understand this minute stuff, you are not going to treat, understand condition of patients. Because is like a name of the game is oxygen, right? This is the game where we are playing with oxygen. Where oxygen is there, John Weston is very big scientist. He told, air goes in and out, blood goes round and round. What does it mean? हम ऑक्सीजन जो एयर ऐसे जाता है और ब्लड घूमता है. सो सिंपल, एयर गोज इन एंड आउट एंड ब्लड गोज राउंड एंड राउंड. ठीक है, अब बताएंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन PO2 एंड SpO2. If you understand that a small piece of then puzzle has been solved. You understand how you're going to treat the patient, and it is very basic. It's not I'm talking about some some advanced level thing. No. The vein is no way. Tell me what is the difference between champion. She knows it. It's such a basic thing. अगर आपको पता नहीं होगा तो how you going to understand? आपको दे दिया गया SpO2 PO2, आपको लगेगा दोनों एक ही है. डिफरेंस दोनों, एक हीमोग्लोबिन से कितना बाइंड किया हुआ है, एक हमारे ब्लड में कितना है. अगर if patient is having some kind of pneumonia, any type of diffusion problem, pneumonia, ARDS, so your PO2 is going to be down. You got my point? SpO2, if hemoglobin is less or whatever, any kind of you have disease with problem with SpO2 going to be decreased. So you should understand CO poisoning and cyanide poisoning. It is going to affect your PCO2, PO2 as well. Please sit down. And rest anything is there. So in ABG also we have electrolytes, but we are not trust on electrolyte because sometime it's arterial blood gas and some plus minus 10 to 15% is vary. So we cannot go directly with electrolyte with ABG. It will give you like a small hint, but you cannot get the exact figure. So better you go for a normal test with ABG. Okay. Next, I want to ask about little bit on because SpO2. What is ventilation and what is oxygenation? Anyone can tell me? Ventilation क्या होता है? Oxygenation क्या होता है? Any input from anyone? Sister, ventilation क्या होता है? Oxygenation क्या होता है? Because we have gone through all non-invasive, invasive, so ventilation and oxygenation. So you should understand the difference between both of them. Please. अब बताएं उसका क्या difference है दोनों में? Before you heard this kind of oxygen, इसका ventilation कैसा चल रहा है? इसका oxygenation कैसा चल रहा है? You have any idea? मैंने last time यहाँ पूछा था मैंने. What is oxygenation? What is ventilation? Removal of CO2 is called ventilation. अगर COPD का पेशेंट है, हम बाईपैप लगा रहे हैं, तो हम वेंटिलेशन के लिए लगाते हैं ताकि CO2 रिटेन कर रहा है. We put the BiPAP
प्रेशर में इंक्रीज करते हैं, CO2 को रिमूव करते हैं, तो उसको वेंटिलेशन कहते हैं। ऑक्सीजन जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हाइपोक्सिया होता है, वी गिव ऑक्सीजन, वी आर कॉलिंग ऑक्सीजनेशन। क्लियर हो गया? few points, because if you understand this few point, then the whole concept will be more clear. Otherwise, no benefit. Like you have not understanding what you're doing. You got my point? So we can go with this slide, and I will ask something if you. Quick recap for four-step methods. Last time we already discussed about it, so I will not go in deep. Okay, access pH, check PO2, PCO2, check bicurve, and just compensations. Okay. Next side we discussed. Three sides we have. What can you tell anyone? Three sides, please. तीन साइड बताएं मेरे को. एक रेडियल, ब्रैकियल, and femoral. Okay, femoral and radial we try to avoid because it's a very big artery, so sometimes hematoma happens. So if patient is radial, you could not find, so then you can go for brachial and femoral, but should be compression for 3 to 5 minutes because it is pressure. Otherwise, after that, complication will be more. Okay. So this is the way. Last time hands-on we have done the way we how to take the sample and everything. So I will not go in detail. This you have to remove air bubbles. Excess heparin is not we cannot accept. Venous contaminations, delay transportations, breath holding and anxiety, and wrong. This is the pre-analytical pitfalls that is to the results. So, ये जो चीज़ है ना, ये तो आपके जो रिपोर्ट है उसको चेंज कर देगा. ओके, ये जितना चीज़ है ना, जैसे कि इसके अंदर एयर बबल रहेगा, तो जब ब्लड में ऑक्सीजन रहेगा तो PO2 इज गोइंग टू इंक्रीज इन योर सैंपल. अभी जो एक्सप्लेन किया कि अगर ब्लड के अंदर PO2 है, ऑक्सीजन है, तो इज गोइंग टू, तो लाइक रिजल्ट विल बी एरर, इट्स नॉट करेक्ट रिजल्ट. और इसी तरह हेपेरिन भी बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, CO2 बढ़ जाएगा उसमें. ठीक है, वेनस कंटामिनेशन, क्योंकि आर्टरी और वेन दोनों साथ में ही जाता है, तो सम टाइम इन प्लेस ऑफ आर्टरी यू गो टू पिक वेन. ओके, सो विथ SpO2 you can differentiate PO2, two way you can differentiate it. ठीक है. And delayed transportation also. क्या होता है कि if not in ice pack, nature of blood is going to break down. So जब टूटेगा ना, तो उसमें से LDH and जो और component है, तो मतलब your result will be going to be affect. So try to be very quickly, and in cold transportation should be in proper way. So the bedside interpretation workflow. Do you people are following that kind of workflow in your in ward and ICU stuff we have here? No, nobody is there. So आप जाते तो क्या देखते हो? पहले ऑक्सीजन पेशेंट जैसे कि ब्रेथलेसनेस कर रहा है, तो आप फर्स्ट व्हाट यू सी, आप ऑक्सीजन देखते हो कितना, सैचुरेशन कितना है, राइट? जैसे आप ब्रीदिंग पैटर्न देखा, थोड़ा सा लग रहा है स्लेवर्ड ब्रीदिंग, हैज एब्डोमिनल ब्रीदिंग लाइक इंटरकॉस्टल ड्राइंग है, तो यू फर्स्ट सी चेक द ऑक्सीजनेशन. ऑक्सीजन कैसे देखते हैं? SpO2 एंड PO2 से देखते हैं. ठीक है, ABG अगर रहेगा तो PO2 देख लेंगे, SpO2 देख लेंगे. देन रीड ABG, read pH. What we explained before as well, it is like today's third session, so it is already explained ki pH and how, what is acidemia, what is acidosis, what is alkalemia, what is alkalosis, has been discussed many times, more than 1,000 times. You people should know. So what is acidosis? Can anyone please? Acidosis क्या चीज होता है? If I'm going to ask patient is having metabolic acidosis, what does it mean? जैसे ये ABG है, मैं किसी को बोलता हूँ कि इसको सिस्टर इसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो कौन सा कंपोनेंट जो है इन ऑन ABG इज गोइंग टू इफेक्ट ऑन रिफ्लेक्ट क्या करेगा? PCO2 करेगा या बाइकार्ब करेगा? बाइकार्ब इज गोइंग टू रिप्रेजेंट मेटाबॉलिक पार्ट, राइट? तो आप वो देख लेंगे ABG में क्या है. ठीक है, प्राइमरी जो डिस्टर्बेंस है, जिस एज आई सेड यू, अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो आप बाइकार्ब देख लेंगे, अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो आप PCO2 देखेंगे. ठीक है ना, PCO2 is going to affect your respiratory part. Bicarb is metabolic part. ठीक है ना, क्लियर?
एनी डाउट? जब बोलेंगे देन वी गो फॉर नेक्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या होता है, कंपनसेशन होता है। इफ पेशेंट विद सीओपीडी और तो उसमें कंपनसेट करता है। इफ फॉर एग्जांपल PCO2 गोइंग हाई, body is going to compensate it, so bicarb is also going to be high. So they try to be like seesaw, it is like on the same level. If patient cannot is not going to like compensate, then decompensation started, where acidosis and alkalosis happens. Okay, and correlate with patient and treatment. Okay, any doubt with this flow chart you people are following in your clinical practice? Okay, just I will repeat it. Check oxygenation, read pH, identify primary disturbance, check compensation is there or not, and then correlate with the patient. ये जो रिपोर्ट है मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, then you inform doctor and concern who is a physician or like clinical associate. So that also we have already discussed before. Composition pattern of the glass. So which way composition acidosis? What I said before, acidosis is with respiration, okay, and the metabolic part is bicarb. CO2 is going to control with lungs. So uncompensated respiratory acidosis means pH will be low because it is uncompensated, not compensated. So pH will be low. PCO2, what is the number of PCO2? कोई high or low? नीचे जाएगा ऊपर जाएगा जी? ऊपर जाएगा, it's there. And what about bicarb? Bicarb either going to be stay little bit more, otherwise same. Both options could be possible. क्योंकि कंपनसेशन तो है नहीं, डिकम्पोजिशन है, तो CO2 must be high, लेकिन bicarb try to be go little bit higher side or stay the same. Okay. So bedside, what is the reason? What could be reason for such kind of situations? Hypoventilation. किसी को sedation दिया है आपने, इसीलिए आप you remember in any time we are asking for give metazolam और कोई भी sedation, हम insist put oxygen. तो उसमें क्या होता है कि हमारा respiratory pattern hypoventilation हो जाता है, respiratory जो rate कम हो जाएगा. जब rate कम होगा तो CO2 को retain. So that's why we are giving oxygen that time. You're not supposed to give any type of sedation like midazolam, propofol, without any oxygen support. You should be keep with you and provide the patient. So keep in mind, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको याद रखना है. जैसे कोई पेशेंट के लिए आए हैं ब्रोंकोस्कोपी के लिए और कोलोनोस्कोपी, EGD के लिए, we are giving sedation, right, for perform procedure. You people are assisting. All the time keep oxygen with you. उनको ऑक्सीजन देना है, नहीं तो ये हाइपोवेंटिलेशन होगा उसमें. क्लियर? हमेशा ये ध्यान रखना, बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन यू पीपल सब मिस बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग. आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो, चीज़ लाइक वेरी इजी. अगर नहीं समझोगे तो फिर यू रिमेंबर फॉरगेट, दैट साइकिल इज गोइंग टू बी कंटिन्यू. ओके. So next, partial compensated respiratory oxygen. Partially compensated है. It is not totally compensated, but in between. Look, seesaw, like इधर से खींच रहा है, इधर से, तो partially compensated है. तो इसमें it is going to be low, but sometime normal. It's not exactly lower side. pH will be like somewhere 7.233, like some very close to be normal, but it's lower side. And PCO2 definitely will be high. And in this case, very important, you have to keep in mind, bicarb will be high because bicarb try to compensate it. What I said before, decomposition is bicarb will stay the same normal or say. Here bicarb will be high because it try to compensate it. Try to match with body, not disturb pH. But here is not like completely, partially. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, किडनी रिटेन CO2 स्टिल नॉट कॉट अप, उस लेवल तक नहीं गया हुआ है. ठीक है. देन फुली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी acidosis. फुली कंपनसेटेड मीन्स व्हाट डज इट मीन? माने बिल्कुल नॉर्मल है. नॉर्मल है फॉर एग्जाम्पल आपका COPD का पेशेंट है, ऊपर दीपा अरोड़ा करके पेशेंट है, हैव यू सीन इन वार्ड? ICU में, वार्ड में भी गई थी, तो उसका ऑलरेडी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, COPD का, तो उसका कंपनसेटेड है. मतलब मीन्स अगर PCO2 is 70,
तो bicarb is also somewhere 39, 40. pH will be same, 7.35 to 7.45, इसी के रेंज में रह रहा है. What we are calling this is a compensated respiratory acidosis. वही चीज कह रहा है, fully compensated respiratory acidosis. pH will be normal. Normal pH range क्या है, please? Anyone can tell me? ओके, तो वो रहेगा नॉर्मल. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट वी विल सी PCO2. PCO2 will be high and bicarb is also going to be high because it is going to be same like seesaw. It's not going to be up and down. It is exactly same like normal people. But here both will be high, PCO2 and bicarb. ठीक है, now we go for a metabolic part. Metabolic is controlled by liver, kidney, right? Metabolic like bicarb. So you see, uncompensated metabolic acidosis, what is going to be happen? Is compensation is not there. It's like you see a patient with DKA, diabetic ketoacidosis. In ward you are handling it or not? Sometimes patient coming with acidosis, sometimes coming with like N-type poisoning. So in that time, pH will be low. Low means what? Like 7.01, 7.02, like less than 7.35. Okay, and PCO2 will be normal, right? But that bicarb is going to be low because bicarb is going to indicate the metabolic part. आपको ये बात समझना है हमेशा कि metabolic is controlled by bicarb, respiration is CO2. ओके, सो इस केस में क्या क्या रीजन कौन कौन सा बीमारी में ऐसा हो सकता है? एक्यूट फेज कुछ भी होगा ना, उसमें ऐसा आएगा, डीके में आएगा, सेप्सिस में आएगा, रीनल फेलियर में आएगा. You got this point? Very important. ये जो पार्ट है, इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये आप जानेंगे तभी यू गोइंग टू ट्रीट एंड आस्क डॉक्टर टू डू समथिंग. Unless you are going to fail it, you cannot catch what does it mean. So decay, diabetic acidosis, sepsis and renal disease, acute renal failure, chronic renal failure, इसमें ऐसा आएगा. सेम लाइक वी डिस्कस बिफोर, पार्शियल कंपनसेटेड, यहाँ पे ऐसा ही आता है, पार्शियल कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस. इसमें क्या होगा? नॉर्मल और लो रहेगा बाइकर पीएच. PCO2 विल बी लो एंड बाइकर क्योंकि कंपनसेट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस कंपोनेंट विल बी लो. यू गॉट मी पॉइंट? ये भी रहेगा. इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है स्मॉल ब्रीदिंग. You will see all the time in ward, ICU, anywhere, and very breathing is very fast and superficial because body try to compensate it. For example, patient आया, उसका बाइकार हो गया है 12, 12, लेस देन 22, तो बॉडी क्या करेगी कि CO2 को रिमूव करेगी, कंपनसेशन है चल रहा है, तो वो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देगी. In ER is very common, patient come with a respiratory distress, not due to any type of respiratory problem, due to metabolic cause. Try to compensate it. Rate respiratory rate उसका है 40, 35, 30. Why? Because this component is low. Bicarb low है. तो bicarb low है, तो what body is going to do? CO2 को रिमूव करने के लिए रेट अपना बढ़ा देगा. Respiratory rate is going to be high. So this way, patient you have to see the when respiratory distress in ABG you have to match. क्या रीजन क्या है? ओके, इस स्लाइड में एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? कुछ भी हो, क्योंकि बहुत ये अगर नहीं समझेंगे तो इसका मतलब रूल जो है वो यू गोइंग टू फेल इट, यू नॉट टू परफॉर्म, आपको समझ में नहीं आएगा. ये नेम ऑफ द गेम है ये टोटल. What I said before, COPD में क्या होगा? You know, COPD में CO2 रिटेंशन होता है, राइट? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है. तो लेट्स सी, 6-year-old with known COPD, increased breathing restlessness over the 3 days, drowsy, using the respiratory muscles, 4 liter ऑक्सीजन नेजल कैनुला पे है. नेजल कैनुला हाउ मच ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है? नेजल कैनुला के थ्रू हम कितना ऑक्सीजन दे सकते हैं? सॉरी, 1 to लेस देन 6 तक थे. हाँ, राइट. ठीक है, उसका PA 7.30, PCO2 68, bicarb is 32 and PaO2 is 58. अब बताइए क्या चीज़ है? एनीवन इस केस के बारे में बताएं क्या है विदाउट सीइंग द रिजल्ट. 4 लीटर O2 तो नहीं देना. नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें. नो, आई एम आस्किंग अनदर थिंग. आई एम आस्किंग अबाउट द योर एफर्ट, यू नो,
nurse's actions, what is nurse will going to do? क्या 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 टेल मी, क्या क्या करना कर सकते हैं? व्हाट इज योर अप्रोच विल बी? ट्राइटेट O2 कॉशियसली, आपको देख के करना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जितना देंगी पेशेंट CO2 गोइंग टू बी रिटेन मोर. ओके. एंड rest interpretation is partial compensated respiratory acidosis with hypoxemia. What is the hypoxemia and hypoxia? Anyone can tell me the difference between hypoxemia and hypoxia? Hypoxemia decrease saturation in blood. No. You people go. I mean, asking this way, you're giving some another direction answer. Hypoxemia is process. If sometime like acidosis, acidemia is now process is going on, result is still pending. Well, result already came, like a patient got hypoxia, then you can, for acidosis, then you call acidosis happen, but that process is called acidemia, the process of getting the acidosis. The process is calling acidemia, and once you got the result, then call acidosis. Same thing, alkalemia and alkalosis. ठीक है. अब सेकेंड क्वेश्चन है डीके का है. So decay, once decay is involved means metabolic, right? Not respiratory, metabolic acidosis. So 24-year-old type 1 diabetes, vomiting, deep, rapid with small breathing. What I said before, small breathing is happening because bicarb is low, body try to compensate it, CO2 going to remove more. So small breathing will be so, like fast and rapid breathing, superficial. तो असली क्या है, ब्रीदिंग इसमें उसमें ऑर्डर आता है, फूड ऑर्डर आता है, एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 4.8. इसका इंटरप्रिटेशन बताओ क्या है? पीएच इज 7.18 एंड PCO2 इज 20, बाइकार इज 9 एंड PO2 9. ये कंपोनेंट वी आर, बाइकार इज 9. दिस इज मेटाबॉलिक वी आर कॉलिंग. इसका इंटरप्रिटेशन प्लीज सिस्टर बताओ क्या है? विदाउट सेइंग आप मुझसे बताओ. ये फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है या मेटाबॉलिक कंपोनेंट है? देन यू गो फॉर नेक्स्ट लेवल. सॉरी, एसिडोसिस रेस्पिरेटरी है, मेटाबॉलिक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस है. सो इंटरप्रिटेशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी कंपनसेशंस, द डीप ब्रीदिंग कंपनसेशन, बिकॉज ब्रीदिंग इज वेरी फास्ट, इसलिए ये PCO2 देखो कम है, वॉश कर रहा है वो, ताकि कंपनसेशन के लिए आ रहा है, बट in spite of compensation, patient not fully compensated. ये आपका कंपोनेंट है जिसमें CO2 रिटेंशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट हम सेडेशन के बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जो व्हाट आई हैव डिस्कस बिफोर, कि एनी टाइप ऑफ यू गिव प्रोपाफोल, मिडाजोलम, पोस्ट OR, like any type of sedation going to act on your brain and decrease your respiratory efforts. उस समय CO2 रिटेन होता है, तो वो बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. सॉरी. So post abdominal surgery, patient 4 hours after IV acquired PCA, respiratory rate is 8, difficult to arouse, SpO2 94% on room air, ABG is 7.26, PCO2 is 62, bicarb is 25 and PO2 is 62. तो ये देखो, ये PCO2 is 62 and bicarb is not compensated. If not compensated means having respiratory acidosis, right? So intubation, acute uncompensated respiratory acidosis, bedside emergency not found. इसमें ऑक्सीजन देते हैं, you have to give oxygen. Okay. So red flag means you have to be very careful. Once there's 6 component in any going to be appear in front of you, you have to start your call your doctor. आप बुलाओ कि जो भी आपके कंसल्टेंट है, स्पेशलिस्ट है, रेजिडेंट है, तो आप अटेंशन ड्रॉ करेंगे कि नहीं ये चीज़ हुआ है. सर वी हैव टू एक्ट क्विकली. इस वर्ल्ड में बोलते हैं शूट फर्स्ट, आस्क क्वेश्चन लेटर. पहले आपको एक्ट करना है, फिर सोचना है कि रीज़न क्या है नहीं है. फर्स्ट यू एक्ट. ओके. तो इसमें जैसे पीएच अगर 7.20 से और 7.26 से ऊपर है, 2 केस हो सकता है, या 7.20 से नीचे हो सकता है, या 7.260 से ऊपर. नीचे एसिडोसिस होगा, ऊपर एल्कलोसिस होगा. ठीक है.
6 जो सेकंड है PO2 इज लेस देन 60, इसका मतलब क्या हुआ? इफ ये O2 इज लेस देन 60, व्हाट डज इट मीन? एनीवन? सिस्टर, अब आप तो वार्ड में सब कुछ हैंडल करते हैं, बताएं क्या है? अगर PO2 लेस देन 60 आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? आप क्या करेंगी फर्स्ट? उसके बाद तो इन्फॉर्म करेंगे वट एवर आप रैपिड रिस्पॉन्स टीम इन्फॉर्म कर लेंगे। ये फर्स्ट आप देखा कि PO2 इज लेस देन 60, यू हैव टू गिव ऑक्सीजन फर्स्ट। हाँ, ऑक्सीजन देखिए, ये केस होता है न्यूमोनिया हो गया, ARDS, इन एनी टाइप ऑफ डिजीज लाइक इन्फेक्शन वगैरह में ये आएगा, ठीक है। हाँ, ये पीएच में लेस देन 7.20 होगा तो एल्कोलॉसिस है। नहीं, 20 तो एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस एल्कोलोसिस ऊपर में होता है। अगर मोर देन 7.60 हाँ, नहीं, 7 पॉइंट एल्कोलोसिस 7.2 7.45 से ऊपर एसिडोसिस होगा, लेकिन दिस इज द लाइक रेड फ्लैग, since something wrong is going to be happen very quickly, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गया। इफ पीएच इज 7.35 से 7.45 है तो नॉर्मल नॉर्मल रेंज, रेंज है। इसके नीचे होगा हाँ। तो एसिडोसिस, इसके ऊपर होगा तो एल्कोलोसिस, ठीक है। Fourth, rising PCO2 is also you have to be considered. How much rising PCO2 impending respiratory failure होता है इसमें, ठीक है ना। अगर PCO2 is going to be high, like 60, 65, 80, so impending respiratory failure means patient is going to be arrest, respiratory arrest, okay. अब next fourth है sudden change in baseline, acute shift in the previous stable chronic patient. Patient का बिल्कुल सही, all report is going like steady, like smooth, but suddenly it's dropped. What baseline drop? Like any type of GCS drop, not conscious oriented, or what parameter we have discussed now. So you have to be very careful and inform the rapid response team. So lactate high with acidosis. Lactate, what is lactate? Anyone can tell me? पता है लैक्टेट क्या है? लैक्टेट हमारे बताता है ना कि बॉडी में जो ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं है, सेल्स को नहीं मिल रहा है। ये क्या क्या हो सकता है? ये हाइपोटेंशन में हो सकता है, ब्लड लॉस में हो सकता है, एनी टाइप ऑफ, मैंने लाइक कहीं पे भी हम सेल्स के अंदर में ऑक्सीजन की डिलीवरी कम है तो लैक्टेट इज गोइंग टू बी हाई। कभी भी ज़्यादा हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इन्फॉर्म करो डॉक्टर का लैक्टेट काफ़ी लेस देन 0.5 ABG में आ जाता है, इसमें भी होगा लैक्टेट। हाँ, lactate 0.6. So in ABG, lactate going to say you. So you have to see lactate all the time. इसके अलावा lactate भी देखना है, ऐसा नहीं किया और पॉकेट में रख लिया, डॉक्टर आए पकड़ा दिया। This manner is totally like you cannot not supposed to do like that. जैसे आपने किया, अपना खुद रीड किया कि कुछ भी लाइक रेड फ्लैग टाइप का साइन है तो यू हैव टू इन्फॉर्म द डॉक्टर, ठीक है ना। ABG करके इज नॉट पुटिंग इन लेस देन 0.5 पॉइंट, हाँ 0.5, 1.1 टू 0.5 करता है ना हर में, जैसे पीडियाट्रिक का अलग हो गया। नहीं है, यूनिट पे डिपेंड करता है। हाँ, यूनिट। फॉर एग्जांपल नाउ मिलीमोल पर लीटर, इफ यू गो फॉर माइक्रोमोल, इफ यू अनदर यूनिट इज गोइंग टू बी अनदर वे। लेकिन हमेशा यू हैव टू सी लैक्टेट ऑलवेज, आपको इन्फॉर्म भी करना है लैक्टेट के लिए। हाँ, नहीं, लाइक 0.1 टू 0.5 इज एक्सेप्टेबल, उसके बाद अगर है तो यू हैव टू बी थिंक अबाउट इट। एंड लास्ट इज पेशेंट लुक्स वर्स देन द नंबर्स। तो जो पेशेंट का जो GCS है लुक लाइक टॉक्सिक। व्हाट डज मीन टॉक्सिक? मीन्स नॉट वेल टेम्परेचर, और भी उसके साथ सिम्टम्स आ रहे हैं तो यू हैव टू इन्फॉर्म, ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग ABG फाइंडिंग कैसे करते हैं? इस बार बोलते हैं इसको, ऑल द टाइम रिमेंबर इस बार। एस मीन सिचुएशंस, बी मीन बैकग्राउंड, असेसमेंट एंड रिकमेंडेशंस। व्हाट इज सिचुएशंस? आप बताओगे कि कौन सा बेड पे कौन सा पेशेंट है, ठीक है ना, ये बहुत इंफॉर्मेशन है। और ड्रॉजी है, टेकिपनिया है, टेकिकार्डिया, यू पीपल आर एवरी डे हैंडलिंग सच काइंड ऑफ कंडीशंस। It's not like only for a study. Every day, patient become drowsy. You have to inform the doctor or concerned persons. So just keep first situations. You saw the patient not look well, inform. First act if oxygen less, add oxygen and then inform the doctor. Okay.
and background. Then you have to see the like what is the history, COPD hai, cardiac hai, renal hai. So you have to first the background you should know. That's why the time of handover you should know what is the case. इसीलिए जनरली आप लोग नई प्रैक्टिस में सिस्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड सिस्टर गिव प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट डॉक्टर कम एंड सिस्टर देखिए दिस पेशेंट केम 5 days before history of COPD and today in ICU 5 days 4 days whatever day and then doctor is going to ask to the doctor first so basically first you give the doctor if patient was 4 days in ICU ward with history of diabetes hypertension and came with renal disease and patient on oxygens I not not in ward but what is the on sort of thing oxygen पे है फिर कौन सा एंटीबायोटिक ले रहे हैं या देन डॉक्टर्स पास स्टार्ट्स उसके बाद यूरिन आउटपुट कितना है फीवर आया कि नहीं आया ये प्रेजेंटेशन देने के बाद देन इट विल अमॉन्ग द डॉक्टर दे गोइंग टू डिस्कस एंड व्हाट इज दे गोइंग टू ऐड इट तो बहुत इंपॉर्टेंट है असेसमेंट भी करना है आपको एबीसी व्हाट वी डिस्कस तो टीम इज नाउ दे आर गेटिंग दे अंडरस्टैंडिंग हम क्या बात कर रहे हैं अब मतलब चीज़ें बदल रही है धीरे धीरे एंड रिकमेंडेशंस ठीक है ना रिक्वेस्टिंग द रिव्यू फॉर द NIV फिर अगर मतलब लाइक what kind of recommendation after that so doctor will ask you for put the NIV you ask for do some extra things shift to ICU depend on the situations okay so की टेक अवे बहुत इंपॉर्टेंट व्हाट इज वन की टेक अवे आपको घर लेके ये भूलना नहीं है आपको याद रखना है हमेशा इस चीज़ को लाइक बांध देना है उसे गिट्टी बांध देना है इसको टेक्निक फर्स्ट कैसे लेना है क्योंकि टेक्निक अगर रॉन्ग रहेगा तो आप कंटामिनेटेड एंड मतलब एरर वाला सैंपल यू विल गेट इट so be careful while taking the ABG sample VBG sample basically in if you doctor want to see about the metabolic component better you go for VBG ABG and what is difference between ABG and VBG ABG for oxygenation we see VBG we see for like metabolic component like DKA and other metabolic we go for VBG so just keep in mind because nobody told you before so oxygenation before acid base, check PO2 and SPO2 before you even read the pH. Okay. Deep rapid breathing is often compensated. जैसे आपको एक्सप्लेन किया था लाइक पेशेंट के विथ DKA एंड रैपिड सॉलो ब्रीदिंग स्मॉल ब्रीदिंग इट इज पार्ट ऑफ कंपनसेशन वो रेस्पिरेटरी कंपोनेंट नहीं है वो बाइकर को कंपनसेट कर रहा है एंड सेम patient clinical picture always outrank the printed number जो चीज़ है उस पर आपको मेंशन करना है escalate early usually as bar and document precisely protect the patients and the nurse so ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यू आर नॉट सपोज टू डू क्या जैसे कि अटेंशन ड्रॉन कॉल टू द कंसर्न डिपार्टमेंट डॉक्टर्स वॉट एवर एंड जो इवेंट्स हुआ है यू हैव टू राइट डाउन very precisely and like pure clear clarity should be there क्या हुआ है 1 by 1 0.1 0.2 0.3 okay so and how much oxygen you placed it और जो अगर हमने वो NIV लगाना है तो NIV के प्रोसेस में क्या क्या उसका फाइंडिंग्स है किस नंबर पे देना है ओके so today what we have discussed today we discussed the ABG how to take the samples from the like in ward and ICU to take the lab procedure logistic part should be keep in cool place corrected manner don't put any type of oxygen inside like air bubbles and anything and indications when we have to go for ABG and why we are taking component of ABG so please again sister who you come what is your good name हाँ भैया इसमें बताओ मेरे को इधर इधर आओ just first you introduce yourself who you are what you are doing and AVG just you tell this is the AVG of number first you tell yourself and then you go Good morning, everyone. My name is Anita. Now I'm reading the ABG sample. So basically, ABG is arterial blood gas. So this is so and what is difference between AVG and BVG ABG is basically used for the oxygen
for measuring oxygen, and ABG for the metabolic. Through biker. So the patient Name, name age, is Lalmani, sex male, mhm. and now Bed number, date, time, bed. date is 16/7/2026. Okay. Time. ओके टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एनी डिजीज इज डायनेमिक लाइक you cannot say कि I have seen the patient every time changing something. It is like ice ball. With time is going bigger and bigger. Disease here after 3 hours it's going to be big. That's we are what we are calling time is drain. Every minute counts. So you should see what time ABG has taken. And now after 2 hours things have been changed. Your plan is going to be changed accordingly. So very important time is there and you have to mention always time कि इस time पे inform किया है क्योंकि ये चीज़ पहले का है now could be another thing and again going to be because if you have seen the previous year like day ABG today might be something different. Sample type is arterial. Okay. Arterial sample है. Patient number 153. Patient ID is 20708. Component of And ABG the pH is 7.38. is normal. Normal is abnormal. Normal is 7.35 to 7.45. It is normal, right? Then Now PCO2 pressure of carbon dioxide is 36 mmHg. the And normal the normal value is 35 to 45 mmHg. is normal, right? Then And the pressure is O2 is 86 mmHg and normal is 80 to 70 to 90. right. And sodium is 130 millimole per liter. Okay. And calcium, value of sodium is 123 to 136. Potassium is 3.1 millimole per liter. Okay. And calcium is 0.76 millimole per liter. Glucose is 89 mg per dl. Normal value of glucose is 70 to 100. Right. And lactate is 0.6. Normal value of lactate is 0.5 to 1. Unless, And acid is 0.1, not 1, 0.1. sir, acid. And that's one not concerned because they have given all the, you have to see the bicarb and SpO2. Bicarb how much? Bicarbonate is 21.3 millimole per Little, liter. little bit lower side. It's not exactly, but should be like 22 to what 27. And SpO2 how much? SpO2 It's down, second last. is 96%. So it means this is AVG. If you see the difference, if for example you don't know what kind of sample do you have, so see the SpO2. If SpO2 less than like 70, 75, so that sample could be when I contaminated maybe venous. So SpO2 all the time it will tell you exactly is arterial or venous. ये बताएगा कि ये ऑक्सीजन का है या वेनस का है. ठीक है सैंपल. Thank you. So any doubt, any questions, please go ahead. Ask me. Brother, come. I haven't asked you. You're sitting along. The last time also you answered a lot. So yes, just again because more practice आपके अंदर ना like brain is going to wire in this way. आप every day you see the ABG. It's not like today you have seen and after 5 days. If you each and every day you have to revise in ICU, come to see the ABG, your interpretations in word as well. So same thing like ECG and that ABG. So my plan for ECG as well. Not today. Now we are planning for ECG. Very important for you people. You go anywhere in the world without ECG, you can't survive. First step to go inside the house should be ECG, like good ECG reading. So please, go, brother, what is your, introduce yourself, please. My name is Manish. I'm an assistant nurse. Work on third floor, a private ward. Now I'm going to tell you about ABG report. नाम बोलो पेशेंट का क्या नाम है. The patient name is Mahapatora Samar. ID is 709, sex male. Model JAM 3500. pH level is 7.47. Is normal or abnormal? Sir, it is abnormal. हाँ. It is higher. So, Alkalosis. अच्छा ठीक है.
नीचे PCO2 to 29 mmHg. so it is a PCO2 normal value. नॉर्मल वैल्यू कितना होता है PCO2 का? हमने बताया था मेरे को 35 से 45, राइट? ये कितना है? So 29. तो ये कम है, मतलब कम है, मतलब एसिडोसिस पार्ट में आ रहा है ना, या एल्कालोसिस में आ रहा है? आगे चलें। PO2 63 mm of Hg. सोडियम में 124. PO2 कितना है? PO2 PO2 sir 63 mm of Hg. ओके, ठीक है। Sodium मैंने 124. PO2 भी कम है। Yes. ओके, Potassium is 3.3. आगे बढ़ो। Calcium 0.52 mole per liter. Glucose 110 mg per dl. Lactose is 1.3 mole नहीं per liter. नहीं, हैंग ऑन। सो लैक्टेट इज हाउ मच? 1.3। 1.3. हाँ, इसमें हायर साइड में है, प्रेजेंट सबसे। और आगे HCT 44. नीचे बाइकर कितना है? Yes, sir. बाइकर 21.1. सो व्हाट इज योर कंक्लूजन ऑन SpO2? नीचे Sir, SpO2 93. 93। तो आपका क्या, इसका क्या है कंक्लूजन, क्या है वो? आप क्या देख के लगता है क्या चीज़ है इसको? फर्स्ट तो आपने देख लिया कि इनको एसिडो एल्कालोसिस है। तो एल्कालोसिस किस रीजन से हो सकता है? क्योंकि आइदर CO2 इज गोइंग टू बी डाउन और बाइकार इज गोइंग टू बी हाई, राइट? Yes. दो रीजन में हो सकता है ना एल्कालोसिस। CO2 जो नीचे आएगा तो रेस्पिरेटरी कंपोनेंट हो जाएगा, अगर Right. बाइकार ऊपर जाता है तो मेटाबॉलिक कंपोनेंट। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर एल्कालोसिस है तो अगर CO2 नीचे जाएगा तभी एल्कालोसिस होगा, ठीक है? CO2 ऊपर जाएगा तो फिर एसिडोसिस बोलते हैं उसको, राइट? तो इसका मतलब कि ये ABG में रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। Okay. गॉट इट? क्लियर? नो डाउट? और कुछ पूछते हैं किसी को? So I think next time we will going to conclude all about ABG and कुछ इसमें टेस्ट भी लेंगे, and then we go for next like topic. Maybe we see the cardiac and another part whatever we have. ठीक है? So that's fine. Thank you very much. So just I love to show more people because you know we have like involved plenty of staff we have, so they could come and join us because more people will come and they will get the information. Otherwise, no benefit. थोड़ा ज़्यादा लोग नंबर्स बढ़ाएं आप लोग, ठीक है? Yes. ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।